Hi guys. So just going to talk a bit about Virat Kohli. Deconstructing a genius knock. India were 31 for 4 at 6.1 overs, and the chances of victory were impossible. तो कैसे किया विराट कोहली ने इस impossible को possible? What was his plan? How did he execute it? What was the situation? What was the opposition? What were the conditions of the ground? What was the support that he received? Did that support actually help him or did it not help him? And what, how his innings progressed phase by phase? What were the different phases? What were the different bowlers? Whom did he choose? Whom did he? So we are going to discuss about Virat Kohli's. We are going to deconstruct probably the greatest T20I innings which has been ever played at international cricket. And it came, and obviously I say the greatest. There have been many innings in IPL में आपने देखा होगा कोई आके लास्ट में 50 of 20, but the stage, the occasion, the ground, World Cup, India versus Pakistan, all that adds to this. And that's why I say this is the greatest T20I innings ever. So let's look at some of the pictures that I'll be sharing. And first, let's talk about the situation and conditions. So this match was held at MCG with overcast conditions. There was grass in the pitch. पहली बार शायद MCG सब लोग expect कर रहे थे it's going to be a belter. Probably there will be a little bit of spin. शेन वॉन का पुतला भी खड़ा किया है MCG के बाहर, तो हमें लग रहा था कुछ स्पिन होगा, फ्लैट होगा, ड्रॉप इन पिच होता है MCG में. It was there was a lot of grass on the pitch, and I don't know why, but I think that was probably the reason why India chose to bat second. Otherwise they would have batted first, because हम trend देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में chasing is becoming tough as the match progresses, and seeing that grass, it can frighten even the best of the players. And obviously, I think Indian bowlers used these conditions very well. But Pakistan, hats off to them, they managed to reach a very competitive score of 159. And when their bowlers came, they actually showed कि उस पिच पे वो उनको ज्यादा अच्छा बाउंस, द पिच रिस्पॉन्डेड टू देम. मतलब इंडियन बॉलर्स को भी रिस्पॉन्ड किया, बट द वे द पिच रिस्पॉन्डेड टू probably a Haris Rauf, the bounce he was getting, and the speed, the nip that Naseem Shah was getting. Probably Indians were more dependent on swing. I thought Arshdeep and Bhuvneshwar swung the ball really well, but the pitch se jo assistance mila, I think that was more Pakistani bowlers. Now coming to Virat's knock, Pakistan, obviously Haris Rauf was breathing fire, bowling probably 140 two plus every delivery. Shaheen Shah Afridi was bowling at 135. Naseem Shah was bowling 142, 144, something like that. And Shadab and Nawaz. Now, Shadab is always a very difficult bowler to get under because his trajectory is flat. It's very difficult to hit him for a six. बहुत कम बार देखा गया है कि शदाब गेट्स हिट फॉर अ सिक्स. एशिया कप में इनफैक्ट बस एक छक्का लगा था शदाब खान को पूरे टूर्नामेंट में. और बहुत मुश्किल होता है. नवाज इज अगेन योर फास्ट plus pace. I mean, he bowls really fast. He can, just throw that ball down. And so how did Virat do it then? How did Virat manage along with Hardik Pandya from 31 for 4? So let's look at the innings of Virat Kohli now. So how did his innings progress? Of course, we have the wagon wheel. Now, MCG before we go into this MCG, the ground MCG, you here you see a circle, but the MCG is not a circle. It's an oval shaped ground. It's an oval shaped ground with very short straight boundaries and very long square boundaries. So obviously the plans of the bowler, they are quite simple. That it's so I'll just draw it. So
if this was, I don't know if you can see this. So if this is a pitch of MCG, now you have very long square boundaries, very long square boundaries, and it's very difficult to hit sixes here. This is the square, this is the offside, this is the leg side, offside, leg side, and these are the straight boundaries are very short. So now, obviously, Pakistan were defending 160, which is not a very big total, but it's kind of competitive total. So they were also under pressure. Let's not forget, but obviously 31 for 4 जब वो हो गए तो वो एक कंफर्ट जोन में चले गए, फिर इंडिया प्रेशर में आ गई. अभी हम देखते हैं विराट कोहली का जो वैगन व्हील है, तो उन्होंने 40 runs out of his 82 runs are in the V, which is 4 and 17. And he has also scored 25 plus 17, that is 42. So he has used this part equally. I mean, जो भी उसने uh, he has used this part equally. Now we'll come to the progress. Power play. Power play. It's really interesting here. Power play. 5 out of 9. Virat was 5 out of 9 balls, 6 dots. That is almost 66%, 67% dot ball ratio. 6 to 10, which was entirely bowled by Shadab and Nawaz. 7 out of 12, 5 dots. Again, I mean, if you see, that's quite high again. 43% dot ball ratio, 66. Say it comes down to 43%. Then it comes to 11 to 15. This is the time where Virat really got going. 30 of 16 with only 2 dots, and the dot ball ratio has fallen down to 12.5%. So it comes from 66% to 43% to 12.5%. There is a phase 16 to 17 where India again struggled, that is 16th and the 17th over. But again, if you see 18, 19th, and 20 overs, so the total phase of 5 overs, Virat has scored 40 runs in 15 balls, and he has played just 2 dot balls, which is again, if you see 2 out of 15, it's again 12 percentage. And in the last 3 overs, that is 18, 19th, and 20th over, he did not play a single dot ball, and he scored 36 runs out of 10 balls, no dot balls at all. 3 fours and 3 sixes, 30 runs out of the boundary shots, and that is amazing. I mean, he scored 6 fours and 4 sixes, which is 48, 24 plus 24, 48 runs in boundaries, and out of that, 30 were scored in the last 3 overs. Okay, so before, I mean, if you leave that out, 3 fours and 3 sixes, he has 3 fours and 1 6. That is like 18 runs in the other part. And let's not forget that Virat came in the second over of the match. He played from second over to the 20th over, and 3 fours and 3 sixes out of 6 fours and 4 sixes. 3 fours and 3 sixes are in the last 3 overs. And now I'm going to say something very controversial, but I believe this is true. I think the collapse actually helped Virat Kohli. The collapse fired Virat Kohli to his optimum temperature. Now, why do I say that? Virat Kohli was struggling. Last 3 years has been struggling. He has been struggling massively. Runs नहीं बन रहे, hundreds का pressure, 71st कब आएगा? I think that Afghanistan knock, if you see that Afghanistan knock, Virat started very slow again. He was opening, and that's the position he likes to bat in T20. We have seen when he leads RCB, so he wants to open. Faf du Plessis ko bhi, he expressed his desire to open. He wants to be the opener of the team. And that's where I think that KL Rahul dismissal brings him early. And he wants to be in that position. He wants to play the power play. He wants to get in. And he gets the time, to play some balls. And if you see the power play, he's 5 of 9 and he's played 6 dot balls. So there are no boundaries scored here. And if you see the bowlers that he has faced here, Shaheen Afridi, Naseem Shah, and Haris Rauf, he has scored 2-1-2 in the power play on these bowlers. And nothing much here, but he's just taking his time. He's soaking in the time. He's seeing that usi samay batsman at the other end, they're getting out. In fact, he's unfortunate to affect one such dismissal of Akshar Patel, which was probably a wrong call from his end. And
His mind is just revolving. I mean, the nucleus of his mind must be just, you know, bursting out. And मतलब कि क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? Have I lost this match? How can I take it? And then I think he found a partner in Hardik Pandya. And I truly believe कि Hardik Pandya and Virat Kohli, if you ask both of them who is their role model or who is the cricketer they like the most, I think that will be MS Dhoni. And I just think they just MS Dhoni the chase. They just MS Dhoni the chase here because they took a risk. They thought will stop scoring. We'll just take singles. We'll just play dot balls. Whatever. We'll just take our time and just take the game deep and see if by some random luck, out of some random luck, that's what exactly happened. We can win this match when Pakistan will be under the pressure and their bowlers will be making the mistakes, their bowlers will be making the errors, even the best of the best will be making the errors, and that is the MS Dhoni strategy, and that is what they did here to Pakistan. Both Virat and Hardik Pandya adore MS Dhoni, and I think they followed his philosophy. A big, I'm not glorifying MS Dhoni here. Obviously, it's Virat Kohli that we are talking about, but that is something they must have taken some inspiration from. So let's see now what are the bowlers that Virat targeted. If you see the total, you'll be shocked. Shaheen Afridi. If you see the total column, Shaheen Afridi, Virat has scored 23 runs in 12 balls. Actually, Naseem Shah has been given the most respect, only 12 of 9. Shadab has been given the utmost respect, 12 of 13. Nawaz, I think, is 20 of 10, and Rauf is 16 of 8. So that's what I'm talking about. I mean, Shaheen Shah Afridi. Why Shaheen Shah? Of all the people, why Shaheen Shah? Why was he the one to get the? Uh, why was he attacked? Why Shaheen Shah, the danger man? Why was he targeted by Virat Kohli? Now, Virat must have realized that Shaheen Shah is not completely fit. A fully fit Shaheen Shah does not bowl at 135. His average speed is not 135. And I think that must have, Virat's experience must have told him, go after Shaheen Shah. He's your target for today. And I think that's what Virat has done. He has gone after Shaheen Shah. Rauf, obviously, he went at much later stage, but I think Shaheen Shah was the target. Shaheen Shah Afridi. Now, I want to show you some clips just to give you some idea. So Virat Kohli comes in the power play and he plays six consecutive dot balls. They're not consecutive. There is one 2 runs scored of Shaheen Shah Afridi, but after that it's like dot dot two dot 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 dot. So four dot balls, six dot balls separated by 1 2, and power play mein he scores 5 out of 9. So he plays 6 dot balls in power play. Then comes Shadab and Nawaz phase where India is already down with 4 wickets. Now ये 4 wickets जो गिर चुके हैं Shadab and Nawaz के आते ही Virat becomes very you know kind of he doesn't know what to do. मतलब he starts taking singles, lot of singles, and it is actually from he hit his first boundary at 11.4, and that was a six of Nawaz. 11.4, and till that point he has already played 24 balls. Let us look at some of the technical aspects of Virat Kohli's batting. If you see the first ball, if you see the first or the second ball of Virat Kohli's innings, this is the third ball. This is the third ball of Virat Kohli's innings, and this is his stride, the front foot stride. Shaheen Shah is not swinging the ball. रोहित एंड केल वो बहुत कंजर्वेटिवली खेले हैं. शाहीन शाह के बाउंड्री बॉल्स को भी उन्होंने डिस्पैच नहीं किया. फुल टॉसेस डाला शाहीन शाह अफरीदी ने, उन्होंने डिस्पैच नहीं किया क्योंकि वो टेंटेटिव थे, वो इन स्विंगर से डर रहे थे. बट बॉल तो स्विंग ही नहीं हो रही शाहीन शाह अफरीदी की. आप डर डर के खेल रहे हो. विराट कोहली आया, ही हैज टेकन अ बिग स्ट्राइड first ball. Now, why I'm telling you this is a big stride, I'll just show you the what Kale and Rohit have also done. Now, this is Rohit Sharma in the first over. This is the stride.
This is where he has played his shot from this position. This is the technique that Rohit Sharma has, because he's fearing the in swinger. अपना पैड ज्यादा बाहर नहीं निकालना चाहता, क्योंकि उसको लग रहा है वो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा. He's not taking out his pad. But look at Virat Kohli. Look how far, because he knows that ball is not going to swing. Shaheen Shah swing नहीं करने वाला है ball. और यहाँ पे रोहित शर्मा, ये he's fearing the swing. You look at KL Rahul. It's a very very, I mean, KL Rahul is actually the worst. If you see Rohit Sharma, it's still, there is a stride out. There is no stride out for Rohit Sharma. There is a big stride from Virat Kohli, but KL Rahul is somewhere in the middle. He's not entirely sure what is going to happen. If you see KL Rahul here again, um, a stride where matlab ki, he's neither, he'll be neither comfortable to play this any shot in this position of the front foot or on the back foot. He'll not be able to play any shot here where the ball is bouncing and skidding off and taking off the surface. From this kind of position, you can't play a shot. You can't play a shot from this kind of position. I'm really sorry, KL Rahul, but you can't. Rohit Sharma is still very well balanced. I would say something that KL Rahul is not. He's not balanced here. If you see Rohit Sharma, he's much more balanced. Even if he's just like Virendra Sehwag, he's rooted at the spot. He's much more balanced. If you see Virat, he's clearly stepping out very aggressively towards the ball, the very first ball. And I'll tell you what is the impact of this shot, which happens the very next ball, and you won't believe what happens. The next ball is Shaheen Shah Afridi is now going around the wicket. Shaheen Shah Afridi ने over the wicket से switch किया round the wicket, and उसके बाद उसने राउंड द विकेट बॉलिंग की है. शाहीन शाह अफरीदी वाज नॉट, ही वाज सीइंग द बॉल, तो स्विंग ही नहीं हो रही मेरी. मैं क्या करूं, मैं राउंड द विकेट करूंगा. राउंड द विकेट करके मैं शॉट करूंगा, ताकि बिगर बाउंड्रीज, जो स्क्वायर बाउंड्रीज जो हम बात कर रहे थे कि स्क्वायर बाउंड्री से बैट्समैन ट्राई करें उसको रिस्क लेने का, वहां पे बिगर बाउंड्रीज को मारे और फुल बॉल को वो स्ट्रेट ना मार पाए. तो ही वेंट राउंड द विकेट, एंड वो 17.6 तक वो राउंड द विकेट थे. 17.6 फ्रॉम फ्रॉम 1 पॉइंट, फ्रॉम 2.4 टू 17.6. शाहीन शाह अफरीदी ने जितनी भी बॉलिंग की है वो राउंड द स्टंप्स की है, and that is where Virat Kohli won the mental battle over Shaheen Shah Afridi. So I'm going to take through some of the shots of Virat. You know, if you see, this is again Rohit Sharma's dismissal to Haris Rauf. Again, he's not ready for the bounce. If you see, he's come onto the front foot पे आ गया है अभी. वो देख रहा है कि कितना bounce होगा ये ball, and this is the one that takes the edge, the top edge. Almost it's a top edge. It bounced so much from Haris Rauf. Haris Rauf is bowling in a different league. He's bowling much faster. And if you see Virat Kohli, Haris Rauf bowling to Virat Kohli. Look at Virat's position. Look at Rohit's position here, and look at Virat's position here. विराट इज ऑलमोस्ट ही स्टैंडिंग टॉल, मतलब कि वो बैक फुट पे, इवन दो मतलब कि ऐसा लग रहा है आपको कि वो फ्रंट फुट पे, ही इज वेरी मच ऑन द बैक फुट. द वेट इज ऑन द बैक फुट. वो बस एक हल्का सा स्ट्राइड निकला हुआ है, बट द वेट इज कंप्लीटली ऑन द बैक फुट. Whereas if you see Rohit, his weight is totally on the front foot, and the ball is going to zip away. It's going to be a zipper, like a short pitch बॉल, जो कि आपके वेस्ट हाइट तक आएगी, आपके एल्बो हाइट तक आएगी, उस हाइट की बॉल होने वाली है. ये भी बॉल उतनी ही हाइट की होने वाली है, लेकिन विराट इज ऑन द बैक फुट, रोहित इज ऑन द फ्रंट फुट. Next ball, Haris Rauf actually goes full to Virat Kohli, and Virat Kohli again, it's a much bigger stride than Rohit. So Virat Kohli with slanted stride, Rohit Sharma has less of a stride, bada stride Virat Kohli, and he takes, I think, 2 runs here again to Haris Rauf. Then comes the middle overs. Middle overs, India is already 4 down, or Virat. इस फेज में हार्दिक पांड्या अभी आते हैं. अभी अभी हार्दिक पांड्या ने आके एक बहुत अच्छा काम किया कि वो ना बहुत सारे सिग्नल्स लेने लगे. He didn't stop taking singles. I thought he took a lot of singles. He played only 4 dot balls in that phase of 6 to 10, whereas Virat played, I think Virat played 5 dot balls there.
So obviously Virat played more dot balls than Pandya, but Pandya kept rotating the strike, giving the strike to Virat, and Virat obviously um, he played 5 dot balls in this phase, one more than Pandya, but both of them were more or less equal. I mean, both of them they rotated the strike. They did not try for any boundaries or any six. They did not try for anything. But when comes the 11th over, um, तो आपको पता है क्या हुआ 12th ओवर में, 11th एंड 12th ओवर में? एक्चुअली शदाब खान को पहले हार्दिक पांड्या ने अटैक किया। पहले हार्दिक पांड्या ने अटैक किया शदाब खान को, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फोर मारा। उसके बाद जब शदाब का नेक्स्ट ओवर आया, छक्का मारा, स्ट्रेट बाउंड्री जो कि शॉर्टर बाउंड्री है, उस पे छक्का नहीं मारा, मिड विकेट पे छक्का मारा। फिर विराट कोहली ने स्ट्रेट बाउंड्री पे छक्का मारा, और फिर पांड्या ने फिर से स्ट्रेट बाउंड्री पे छक्का मारा। अब जो शदाब खान का ओवर आता है, एंड शदाब खान इज वेरी स्मार्ट, आई टेल यू, ही इज मोर स्मार्ट देन नवाज। नवाज को जब छक्के पड़े, नवाज जस्ट केप्ट बॉलिंग फास्ट, बस फास्ट डालता गया, फास्ट डालता गया। उसका स्पीड अगर आप देखो तो 82 से शुरू होता है और 104 पे खत्म होता है नवाज का के बॉलिंग का। बट शदाब खान वाज वेरी इंटेलिजेंट, ही केप्ट बॉलिंग 85, 82, 90, ये करके वो बॉलिंग करता रहा। और उसने सिर्फ 7 रन कंसीड किए ओवर में, बट वो 7 रन भी कंसीड नहीं करते। मतलब शदाब खान वाज सो गुड, बट देयर वाज वन शॉट दैट विराट प्लेड, एंड उसको पता था कि मैं अगर फुल डालूंगा तो विराट मुझे छक्का मारेगा। कैट एंड माउस का गेम चल रहा था, शदाब को ऑलरेडी पड़ चुकी है 20 रन, और अब मुझे विराट भी टारगेट करेगा। और विराट ने उस ओवर में एक्चुअली उसको टारगेट किया था, बट he pulled his length back. He was bowling short and wide. पांड्या को भी short and wide डाला। पांड्या ने एक थर्ड मैन पे मिस किया एक्चुअली चौका, उसमें विराट ने आगे निकल के कोशिश किया, बट Shadab pulled his length. But there was one boundary which I feel was very special and was placed perfectly. And ये फुटवर्क था विराट कोहली का। अब देखो वो रेडी है कि मुझे आगे बढ़ के मारना पड़े तो मैं मारूंगा आगे बढ़ के, लेकिन शदाब इज क्लेवर, शदाब इज गोइंग टू बोल शॉर्ट एंड वाइड प्रोबेबली। तो वो उसके लिए भी रेडी है। तो उसका बैक फुट का बैलेंस एंड फ्रंट फुट का बैलेंस, आई मीन इट्स सो ब्यूटिफुली सिमेट्रिकल हियर। एंड देन ही प्लेस दिस शॉट, जस्ट शिफ्टिंग हिज वेट a little, and this goes for a four. Now Naseem Shah comes, and again he is bowling. Naseem Shah को सबसे कम रन पड़े out of all the pacers. Of course Shadab 12 of 13, but Virat Kohli was the most, could not score much of Naseem Shah because he was bowling perfectly. He was bowling slower bouncer, slower bouncer, slower bouncer, स्लोअर बाउंसर बस डाल रहे हैं नसीम शाह। और फुल जब डाल रहा है तो पेस के साथ डाल रहे हैं। तो यहाँ पे उसने जो डाला है वो स्लोअर बाउंसर डाला है, और इसमें विराट ने एक 2 रन के लिए उसको मारा था कवर्स के ऊपर। तो विराट वाज रेडी फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ बॉल्स, मतलब कि उसको पता था कि इस पिच पे यही बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान, बिकॉज कुछ और नहीं हो रहा, कुछ स्विंग नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये लोग दे विल जस्ट स्टिक टू दिस काइंड ऑफ प्लान्स, एंड विराट वाज रेडी फॉर देम। If you see Shaheen Shah Afridi 48 of 18 required, again Virat is ready for it. And Shaheen Shah round the wicket की जाल में फंस चुका है, और वो राउंड द विकेट ही बॉलिंग कर रहा है। यहाँ पे उसने फिर डाला एक स्लोअर काइंड ऑफ, मतलब कि जिसको विराट कोहली ने, स्लोअर बाउंसर था जिसको विराट कोहली ने पुल किया, वो ऑलमोस्ट छक्का हो गया था। नेक्स्ट बॉल शाहीन शाह सोचता है अब मैं फुल एंड फास्ट डालूंगा, थोड़ा वेरी करूंगा, एंड विराट इज अगेन रेडी फॉर द शॉर्ट बॉल। यहाँ पे आपको देखना है विराट इज रेडी फॉर द शॉर्ट बॉल, वो रूम बना के खड़े हैं, बट ही गोज फुल एंड फास्ट ऑन द लेग स्टंप, एंड विराट कोहली, दैट इज द genius of Virat Kohli, he gets back to it, and the bat is faced at such an angle that it goes over covers के ऊपर उन्होंने ये शॉट मारा, and that was genius. And now is शाहीन शाह टोटली ट्रैप्ड इन विराट का मायाजाल, और यहाँ पे आता है 17.6, एंड नाउ अफरीदी हैज गॉन ओवर द विकेट गाइस, आफ्टर इतने मार खाने के बाद राउंड द विकेट, राउंड द विकेट। क्यों राउंड द विकेट गया था? क्योंकि मैंने आपको पहले बॉल पे बताया था, ये वाला जो स्ट्राइड था विराट, ये यहाँ पे ये ओवर द विकेट है, आप देख सकते हो अफरीदी यहाँ पे ओवर द विकेट है। और इसके बाद उसने पूरी बॉलिंग जो की है, ये रोहित शर्मा और केएल राहुल को भी उसने ओवर द विकेट ही किया, ठीक है। और उसके बाद पूरी बॉलिंग उसने राउंड द विकेट किया है। 17.6 पे जाके वो अपनी बॉल की का लाइन बदल रहा है, मतलब कि अब वो ओवर द विकेट जा रहा है।
और वहां पे विराट हैज मेड अ परफेक्ट एडजस्टमेंट। उसने देख लिया कि फिर से ये शॉट ही बोलेगा डालेगा, एंड ही हैज मूव टू द ऑफ स्टंप। जबकि आप यहाँ पे देखो, ही ऑलवेज मूव्स टू द लेग स्टंप, ही इज मूविंग टू द लेग स्टंप, बट हियर ही इज मूव्ड टूवर्ड्स द ऑफ स्टंप, और ये इजीली छक्का मार दिया। So now I come to the next two shots, the best two shots of this match, that was hit on Haris Rauf. एंड हारिस रऊफ आग उगल रहा था इस मैच में, इस ओवर के पहले, और विराट ने ज्यादा उसे स्कोर नहीं किया था। हार्दिक पांड्या को हारिस रऊफ फंसा दिया था, क्योंकि हार्दिक पांड्या के गेम में एक वीकनेस है कि वो जब शॉर्ट रहता है और जब क्रैम्प हो जाता है वो, और वो बॉल फास्ट होता है, 140 प्लस के अबव होता है, अगर वही डैनियल सैम्स करता है तो वो कैनबेरा में छक्के मारता है उसको। बट अगर फास्ट होता है और क्रैम्प हो जाता है तो वो नहीं मार पाता उन शॉट्स को। और इस चीज का फायदा उठा रहा था हारिस रऊफ। बट विराट कोहली को उसने पता नहीं क्यों, ये स्लोअर थोड़ा बॉल था, उसने एक स्लोअर बॉल डाला। उसको लगा विराट कोहली पुल करेगा उसको, विराट कोहली फास्टर एक्सपेक्ट करेगा बॉल, और वो पुल करेगा, मिस टाइम होगा। बट विराट कोहली टाइम दिस बॉल टू परफेक्शन, एंड हियर इज द अपर बॉडी कोर स्ट्रेंथ ऑफ विराट कोहली, जो वो जिम में करता है। वो जो हेवी वेट्स इमीडिएटली उठा के छोड़ देता है, यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ दिख रहा है। मतलब कि ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ आप देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो अबव वेस्ट हाइट है, अबव वेस्ट हाइट कांटेक्ट, एंड द टाइमिंग इज सो स्वीट। ही इज एबल टू ब्रिंग द बैट, अ वेरी हेवी इंस्ट्रूमेंट, सो अप, लाइक मतलब कि वो ऑलमोस्ट यहां तक अपना ला रहा है ताकि स्वीट स्पॉट पे लगे बैट। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही अमेजिंग है। बैलेंस एक जो है कि हाउ टू बैट साइमल्टेनियसली ऑन द बैक फुट एंड फ्रंट फुट, ये आई थिंक विराट से अच्छा इंडियन टीम में कोई भी नहीं कर सकता। और ये वन ऑफ द रीजंस व्हाई विराट वाज एबल टू डू इज बिकॉज ही गॉट इनफ टाइम टू सेट, और ही वाज नॉट इन एनी हरी, बिकॉज कोई बोल नहीं रहा था उसको हरी में होने के लिए। टीम मैनेजमेंट, अब वो इंग्लैंड में जब आउट ऑफ फॉर्म था तब वो हर बॉल पे चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आते ही 11 ऑफ 3 खेल के जा रहे हैं। अब कोलैप्स कर गए तो उसको कौन बोलेगा, कौन बोलेगा उसको टीम में वाटर बॉय भेजो और उसको बोलो मारने के लिए। यार यहाँ पे तो हम नेट रन रेट का सोच रहे थे कि हम नेट रन रेट अपना संभाल ले किसी तरह। तो इसमें बहुत सही एक था। और इस शॉट के बाद क्या होता है, इस शॉट के बाद क्या होता है, हारिस रऊफ फाइन लेग को पीछे भेज देता है। हारिस रऊफ बोलता है मैं अब स्लोअर बॉल तो ट्राई नहीं करूंगा विराट को, विराट सेट हो चुका है, उसको पता चल रहा है स्लोअर बॉल कब आने वाले हैं। मैं अब फाइन लेग पीछे भेजता हूँ और फास्ट डालूंगा, फुल फास्ट और शॉर्ट डालूंगा। और नेक्स्ट बॉल उसने जो फुल फास्ट और शॉर्ट, ये तो लास्ट शॉट ही है, देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ है, अबव वेस्ट हाइट, एंड बैट एंड एल्बो का पोजिशन। मतलब कि अगर कोई इधर पे स्वीट स्पॉट पे मार ले रहा है बैट का, हैट्स ऑफ विराट। तो अब हारिस राव फाइन लेग पीछे भेज देता है और फास्ट एंड शॉर्ट ट्राई करता है। अभी विराट वॉज रेडी फॉर दिस, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ फास्ट बॉल। बट ये जो शॉट है आप देखो, यहाँ पे विराट का पोजिशन जो है वो एक्चुअली, उसको लगा ये फुल बॉल है, बट देन ही थॉट कि जो ये जिप होगा सरफेस से, उसके लिए उसको और लो जाना पड़ेगा। और उसका पैर यहाँ पे देखो आप, वो एकदम बेंड हो चुका है, मतलब पैर यहाँ पे जो थोड़ा सीधा था वो पूरी तरह से, मतलब ये शॉट खेलने के लिए वो पूरी तरह से लो हो चुका है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह से लो हो चुका है ये शॉट खेलने के लिए। एंड दैट इज द जीनियस ऑफ विराट कोहली। और ये फाइन लेग था, उसके बावजूद फाइन लेग के ऊपर सेल किया द पॉइंट, द कॉन्टैक्ट वाज सो गुड, एंड इट इज नॉट अ टॉप एज, इट वाज अ genuine middle of the bat shot that goes. And obviously Nawaz, again, just to display the upper body strength of Virat Kohli, again Nawaz when he bowls the full toss and Virat has to hit that ball and he's not got the middle, ये मिडिल पे नहीं लगा है उसके, it's somewhere in the bottom of the bat that he's got it, and still he's managed to clear that boundary. इनफैक्ट ये विराट का जो बोल्ड हुआ था उसका मैं दिखा रहा हूँ, फाइनली नवाज ने एक्चुअली फुल डाला, एंड दैट इज वेयर व्हेन ही गॉट विराट कोहली। एंड whenever Pakistan is bowled short, whenever Pakistan is bowled short, they were punished, they were punished, full balls पे भी, but short balls पे ज्यादातर विराट was always ready, because he knew the Pakistani plan. It was going to be slower bouncer, it was going to be bouncer with cramping him, trying to cramp him. He was able to do all, he was able to uh,
find a solution to the problem, and that's what great athletes are. They find a solution to the problem. He was able to put pressure with this kind of a stride, and Shaheen Shah Afridi had to change his line of attack. So I feel ki this is a brilliant innings. I mean, this is a fine example of the innings, the strength, the skills, the execution, the plan that he made. जिस तरह से उनका इनिंग्स प्रोग्रेस हुआ, अगर आप देखो तो मतलब कि इतना 10 ओवर्स तक उन्होंने पूरा छोड़ा हुआ था अपना गेम। और इस समय मैं आपको बता दूं कि रिक्वायर्ड रेट 11.5 था, ठीक है, सॉरी 12 था required. So 11.5 third. At 10 overs, India needed 115 runs, and in the 5 overs, India needed 60 runs. तो एक्चुअली जब विराट ने मारा ये 11 to 15 में 30 आउट ऑफ 16, तो उसके बाद भी 12 रन पर ओवर रिक्वायर्ड था, और लास्ट 3 ओवर्स में 16 पर ओवर रिक्वायर्ड था। एंड हार्दिक पांड्या, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हार्दिक पांड्या supported him very well in the 11 to 15 phase, but when it comes to 16 to 17 phase, Hardik was absolutely not able to find any timing. He was 5 out of 7, and then in the death, though he was, I think he was just 3 out of 4. He didn't get any shot, and he was just, 8 out of 11. I mean, that's shocking. Hardik Pandya in the overs when we expect Hardik Pandya to finish the game. So from overs 16th to overs 20th, Hardik Pandya just scored, I think, around yeah, it's 8 runs out of 11 balls. 8 runs out of 11 balls, and Virat had to make that chase of 60 of 5 overs, 48 in 18 balls, all by himself, because Hardik Pandya was not able to get any contact on Naseem Shah or Haris Rauf. He was not able to find, and obviously Nawaz को भी punish किया. Virat Kohli का strike rate 200 against Nawaz, 200 against Shaheen Shah Afridi, and Rauf के against 200. 200 against Rauf, 200 against Nawaz, and 200 against Shaheen Shah Afridi. Shaheen, Rauf, and Nawaz. तीनों को 200, शदाब को 100 का स्ट्राइक रेट, एंड नसीम को ऑलमोस्ट, ठीक है, 120 का 125 का स्ट्राइक रेट। तो ओवरऑल दैट्स हाउ ही बैलेंस्ड आउट हिज इनिंग्स। एंड इफ यू सी पावर प्ले के एंड में उनका जो स्ट्राइक रेट था 50 का, फिर 60 का स्ट्राइक रेट हो गया, 7 आउट ऑफ, ही वाज 12 आउट ऑफ 21, 15 आउट ऑफ 24, 62 का स्ट्राइक रेट चल रहा है, और वहां से ही मैनेजेस अ स्ट्राइक रेट ऑफ 240, and in the last 3 overs a strike rate of 360, and that is why I call him 360-degree player. मानना पड़ गया विराट कोहली, what a knock, and I loved actually watching this knock ball by ball and bringing it to you, deconstructing this knock to you, showing you how extraordinary this player is of our generation. And please let me know in your comments, what do you think? Have you seen a better knock, and what were the aspects of Virat's batting that I missed out? Was there anything else that could have been added? And thank you so much, guys. We'll be bringing more cricket to you. And thanks, and keep subscribing our channel. Thank you, and bye.